हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो सीरीज जरा सी केमिस्ट्री में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनोमर। दैट मींस these are some kind of isomers which are formed in carbohydrates. So first of all, to learn about enomer, we have to identify the anomeric carbon. Suppose this is our structure of glucose, which is having a primary alcohol at one end and one aldehyde functional group at the other end. This is aldehyde. Now, remaining carbons are having OH, H, H, OH, and OH. Now you know that at the last chiral center, OH is on the right side, therefore this is having a D structure and it is a glucose. This is D-glucose. This is Fischer projection, but a scientist Haworth gave an idea that glucose must have a cyclic structure. That is known as Haworth projection of glucose molecule. And to make Haworth projection, here identification of anomeric carbon is as. Suppose this carbon, which is having a carbonyl functional group, this carbon which is having carbonyl functional group is considered as anomeric carbon. कोई भी कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाएगा, क्योंकि उस एनोमेरिक कार्बन में से ही हमें एनोमर्स मिले। किस तरह से, चलिए देखते हैं। सपोज दिस पाई बॉन्ड is shifted towards this oxygen, then this carbon will lack one valence and this oxygen is having a negative charge. So hydrogen from this last chiral center will go to this oxygen and it will become OH, and this oxygen which is having one free valency will attach with this carbon. So this oxygen is having a bond with this carbon. In that condition, the structure so formed will look like this. तो यहाँ पर आ जाएगा H, जो कि इस कार्बन से आया है। यहाँ पर H ऑलरेडी था ही, बाकी के कार्बन वाले स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। H, OH, OH, H, H, OH. Now this H and O, because this H is shifted to this oxygen, so this O is having a free valency, and that oxygen is having a bond with this carbon. Now this is the cyclic structure of glucose and this carbon is anomeric. तो ये एनोमेरिक कार्बन के साथ लास्ट कायरल सेंटर वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, जिसके कारण हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर हम मेंबर्स देखें तो यहाँ पर 6 मेंबर वाली एक रिंग बनी है। 1, 2, 3, 4, 5 and the 6th member is oxygen. This carbon is out of the cyclic structure. ये अलग है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर वाला कार्बन। तो अगर इसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के तौर पर ही अगर बताना चाहे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। पहले हम लोग एक साइक्लोहेक्सेन टाइप का कोई स्ट्रक्चर लिख लेते हैं और यहाँ पर राइट साइड पर इस कॉर्नर पर हमें ऑक्सीजन बता, जो कि ये ऑक्सीजन। फिर हम क्लॉकवाइज बताना शुरू करेंगे। इसको हम लोग पहला कार्बन नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6. फर्स्ट कार्बन शुड बी एज क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 and 5th carbon. 6th carbon will be out of ring. Now draw some standing lines and 6th carbon should be over here. Now this first carbon is having hydrogen and OH functional group. यहाँ पर एक रूल हमें फॉलो करना है। इस स्ट्रक्चर में जो लेफ्ट साइड हो उसे हमें ऊपर की ओर लिखना है और जो राइट साइड है उसे हमें नीचे की ओर लिखना है। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर H ऊपर, OH नीचे, यहाँ पर भी H ऊपर, OH नीचे, यहाँ पर OH ऊपर आएगा, H नीचे रहेगा। यहाँ पर एक H है और एक CH2OH है। CH2OH को हमेशा ऊपर ही लिखना है और H को यहाँ पर नीचे लिखना है। ये 4th कार्बन वाला H और OH हमें भी दिखाना बाकी है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया डी ग्लूकोज का। ये डी ग्लूकोज ही है। बट नाउ द पॉइंट
comes at first carbon, which is an anomeric carbon. If OH is attached on the right side, that means OH is below the cyclic structure, then such isomer is considered as alpha isomer. Anomers are denoted as alpha and beta. So here we have alpha D glucose. D with respect to the position of OH in normal structure. OH at last chiral center. If right side, then it is D. And alpha represents the OH of anomeric carbon in cyclic structure in डाउनवर्ड. नीचे अगर OH हो साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो उसे अल्फा कहा जाए. और अगर हम इसका बीटा ड्रॉ करना चाहें तो ये जो हमारा एनोमेरिक स्ट्रक्चर वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर था उसकी अगर हम मिरर इमेज बनाए तो उसका हम एनोमेरिक बीटा एनोमर भी बना सकते हैं. चलिए यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं. मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ. ये हमारा था OH right side, therefore it is alpha B glucose. Now इसका एक ही कार्बन की पोजीशन अगर बदले तभी उसे बीटा कहा जाएगा. ये सभी नहीं बदल रहे हैं. That means alpha and beta are not mirror images of each other. Suppose if we have structure of normal glucose like this, H, OH, 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 H, H, OH, H, OH. As OH is on the right side, this is the glucose. But here, the anomeric carbon contains oxygen on left side. In that manner, if this H goes to this oxygen, because this oxygen accepts this pi pair of electron, then H will attach over here and this oxygen will have a bond with this carbon. So again we have a cyclic structure which will look like this. 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now here this O will have H, comes from this oxygen. Here H is already present. H, OH, OH, H, H, OH, and this O will have a bond with this carbon. Now if you observe that here, this is our anomeric carbon, and at this anomeric carbon, OH group is situated on the left, and as OH is on the left at anomeric carbon, then such structure is said to be beta. But here OH was on the right side at last chiral center, therefore it is D and it is a structure of glucose. So this is beta D glucose. And if you want to draw the cyclic structure of this beta D glucose, then it will be identical to alpha D glucose. The only change is that the position of this H and OH at first carbon will be altered. The remaining all functional groups will retain their positions. यहाँ पर ही चेंज आएगा. ये सभी अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे. तो अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, जगह हमें कम पड़ रही है, लेकिन फिर भी कहीं हम लोग जगह करके ये अब मैं मिटा दे रहा हूँ. यहाँ पर ये दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए. यहाँ पर OH लेफ्ट साइड होने के कारण इसे थीटा कहा है, यहाँ पर OH राइट साइड था इसलिए इसे अल्फा कहा है. बाकी के सभी कार्बन के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप्स में कोई भी चेंज नहीं आता. दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर एनोमर्स एंड एनोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, तो अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज का. इसको हम लोग बीटा दे रहे हैं और इसको देख के हम लोग बीटा का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ cyclohexane type structure. At the right corner, oxygen will be there. First, second, third, fourth, fifth, and sixth carbon will be above the plane. So here we will have a sixth carbon. Now start counting from carbon number 1, the first carbon. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So first carbon is having OH on left, and as it is on left, we will write it above
and H below, H, OH, OH, H, H, OH, and as I told you that CH2OH should be written on always above and then H below. Now this contains OH upside, therefore it is beta, and as the OH on the simple structure at last chiral center was right, therefore it is D and it is glucose. So alpha D glucose and beta D glucose are having mostly similarity in structure, but the only difference is the position of OH and H at anomeric carbon. So this carbon, which is known as anomeric carbon, which differs in the arrangement of position of H and OH, and therefore anomers are formed. There are only two anomers, alpha and beta. ग्लूकोज में भी होता है, फ्रुक्टोज में भी अल्फा और बीटा होता है, गैलेक्टोज में, मेनोज में, सभी में. If there is an aldehyde or ketone group present in our sugars, then such aldehyde and ketone और कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहा जाएगा. उसका अगर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में 6 या 5 रिंग भी होगी, और उसके हिसाब से OH की पोजीशन को देखकर हम लोग बीटा और अल्फा में उसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ये था इंट्रोडक्शन, कुछ परिचय एनोमर का, जो कि हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लेके बनाया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रुक्टोज के भी एनोमर बनाएंगे, वो भी अल्फा और बीटा में पाया जाता है. ओके, तो आशा है आपको शायद अल्फा और बीटा किस तरह से बनते हैं पता लग ही गया होगा. छोटे से वीडियो में हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड लगेगी आपको, लेकिन छोटे वीडियो में इसको हमें समाना था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही स्पीड में मैं बोल गया हूँ. लेकिन आप वीडियो को एक या एक से ज़्यादा बार देखें तो आपको डेफिनेटली आ ही जाएगा. वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, पसंद आया ही होगा, पसंद ही आना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं थोड़े से समय में आपके सामने रख रहा हूँ. अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें. ओके देन.